Hello everyone, a very good evening from the Bodhi Academy. Uh, we are on YouTube Live to understand the strategy of the exam for Goa Staff Selection Commission, how we are able to score, how we will be able to get selected, and what are the pattern and topics of the examination. But more and more people are waiting, joining in. So we'll just wait for a minute and we'll wait for 2 minutes and then we will start. Okay, so the time has come for which everyone was waiting. Goa Staff Selection Commission on a regular basis notifications निकाल रहा है. Just few days back there is 1439 vacancy notification has also come. तो एग्जाम्स जो हैं वो धड़ाधड़ एक के बाद एक ये सारे के सारे एग्जाम्स हो रहे हैं. सो वी थॉट कि लेट अस टेल द स्टूडेंट्स द स्ट्रैटेजी ऑफ दिस एग्जामिनेशन. इस एग्जाम में क्या आएगा, किस तरीके से इस एग्जाम को फेस करें, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दिस एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन विल बी how you will be able to clear this exam. तो उसके लिए we are here and we are meeting. Okay. So first of all हम इसकी थोड़ी requirements देख लेंगे कि what is going to come in this examination. So when you see this thing in detail, the Goa Staff Selection Commission इनका जो ये notification आया हुआ है will directly go to for the post. जिस post के लिए हम लोग ये YouTube live कर रहे हैं, that is technical assistant post. So in technical assistant, there are many branches. जैसे one was civil, 57 vacancies are there for technical assistant civil. Then there are other exams for technical assistant mechanical and electrical. And very good part is अभी जो notification आया है उसमें भी mechanical, electrical and civil. For all these three branches, there is vacancies for junior engineer and huge vacancies. यहाँ पे तो vacancies फिर भी थोड़ी कम है. Like technical assistant for computer electronics IT भी है. Okay, but the posts are less. Whereas the same thing, the same number of posts are very high as far as this exam is concerned. The technical officer, the junior engineer exam is concerned. So all these vacancies are there. I hope ki qualification and all you guys have already read. I will not go much deeper into it. But let us come to the most important part जो आज हमको discuss करना है, syllabus and scheme of examination, which many guys might have seen, many guys might not have seen. Okay, so if we go in detail and directly moving on to our exam named technical assistant. Okay, so for technical assistant civil and other technical assistance exam as well, there is reasoning, test of reasoning for 10 marks. There is test of mathematics 20 marks. Test of konkani is there for 10 marks. English is there for 20 marks. 60 marks का क्वेश्चन है, 75 मिनट्स का एग्जाम है.
अगेन 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 60 क्वेश्चंस विल बी देयर, 75 मिनट्स इज द टाइम अलॉटेड टू यू फॉर ऑल द टेक्निकल असिस्टेंट. सो मोर और लेस सभी का एग्जाम एक जैसा ही होने वाला है. 60 marks and 75 question. So for one question you will get around how many? You can easily see to it कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम आपको मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 1.25, मतलब 1 मिनट एंड 0.25 मतलब 15 सेकेंड्स. 1 minute 15 seconds is the time allotted for one question which you will get. There is no negative marking in the exam, so आप में से जो भी हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेगेटिव मार्किंग इज नॉट देयर. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, मिनिमम पासिंग मार्क्स, जितने मार्क्स कम से कम चाहिए. सो आउट ऑफ 60 इफ यू कैलकुलेट 45%, 27 marks you need to get in order to get qualified. If you are from OBC or PWD category, 24 marks is the one which you get, आपको minimum चाहिए ही चाहिए. And if you belong from SC/ST category, then 21 marks आपको चाहिए ही चाहिए. These are minimum marks which you need to get in order to qualify for examination. ये minimum passing marks है. I'm still not talking about the merit. These are the minimum passing marks which you need to get. But the most important segment in this is this point. First 10 questions which will be there in Konkani language, 4 marks is the minimum passing. 4 marks is the minimum passing. Only those candidates who secure minimum 4 marks, उन्हीं के पेपर आगे चेक होंगे, अदरवाइज वो पेपर चेक नहीं होंगे. सॉफ्टवेयर ऐसा लगा के रखा हुआ है. तो सबसे पहले आपको ये 4 मार्क्स चाहिए ही चाहिए. Okay, now coming to the most important factor of the same, say for example out of this 60 marks, even if you score 50 और कोंकणी के 10 में से अगर आपने 2 स्कोर किया है तो भी आपका पेपर करेक्ट नहीं होगा. पेपर करेक्शन विल नॉट बी डन बिकॉज आपको कोंकणी में मिनिमम 4 चाहिए. सो हियर कम्स द स्ट्रैटेजी, द गोल्डन स्ट्रैटेजी जो आप इस एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ भी करके यू हैव टू सॉल्व कोंकणी. अदर टॉपिक्स यू कैन सॉल्व लेटर. सो इफ यू गो टू द strategy of solving the exam paper, first shall be Konkani. And if you want to maximize, now comes the another point कि मैक्सिमाइजेशन कैसे करना है, तो उस पे बाद में आते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज सबसे पहले आप कोंकणी का पेपर सॉल्व करिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो कोंकणी इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू. नेक्स्ट, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, दे विल गेट 20 मोर मिनट्स. पॉइंट नंबर 4, 20 मिनट आपको और ज्यादा मिलेंगे. नेक्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बहुत लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा ध्यान से नोटिफिकेशन. पॉइंट नंबर 5, इफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स इन सीबीटी, 2 या 2 से ज्यादा अगर इक्वल मार्क्स लाते हैं सीबीटी एग्जाम में, देन ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी एज पर देयर डेट ऑफ बर्थ. उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरिट डिसाइड होगी. सो द पर्सन हु इज बोर्न अर्लियर शैल बी गिवन प्रेसिडेंस. जिसकी एज ज्यादा होगी, जो एल्डर होगा, दे विल गेट दिस पोस्ट. सो अगर आपकी एज कम है, like we believe that most of the students giving this examination of 24-25 years of age, आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करनी होगी, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन, नीदर गेट सेलेक्टेड इन दिस. Scheme of shortlisting, very very important. This is the marks which are there. So for post number 1, 2, 3, and then post of Goa PSI, and after that we will have post of technical assistant. Okay, so technical assistant के जो पोस्ट है, पोस्ट नंबर 6 to 11, द नंबर इज 15 टाइम्स. इसका मतलब ये होता है कि सीबीटी 1 जो आप एग्जाम दिलाने वाले हैं, अगर उसमें 20 वैकेंसीज हैं, 20 पोस्ट हैं, सो आफ्टर सीबीटी 1 20 times 15, 15 twos are 30, means 3000 students, sorry, 300 students will only be selected for CBT2. So आप बिल्कुल ये नहीं सोचिएगा कि if you have scored 27 marks being in general category और 28 marks कि आपको CBT2 देने मिलेगा. उसमें भी मेरिट है. 27 marks is just qualifying. CBT2 सिर्फ वही दिला सकते हैं जो ये टॉप 300 में आएंगे. ये एक एग्जाम्पल है. If there are 20 posts,
क्योंकि उसमें रिजर्वेशन भी है. सो से फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी में देयर आर 10 वैकेंसीज, SC category में there are 5 vacancies, ST category में there are 3 vacancies. So they will take 10 times 15, means 150 they will shortlist in general, 5 times 15, 75 they will shortlist in SC, and 15 times 3, 45 they will take through ST. These are the number of people who will be writing CBT2. So the exam strategy is very very important, how to maximize the score. If you see the last Goa Staff Selection Commission exams, out of 60 cut off was approximately 40 to 43. उसके बाद के ही जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को CBT2 देने का मौका मिला था in case of LDC paper, LDC exam. So if you want to get selected in this, you should target 50, because सारे के सारे engineers exam देने वाले हैं भाई. इसमें engineers की maths ऐसा consider किया जाता है, वैसे भी अच्छी होती है, and age का भी factor है. तो आपको ये टारगेट दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, 50 मार्क्स. और अगर 50 मार्क्स यू हैव टू गेट, यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 54 से 55 करेक्ट. सो अगर आपको ये मार्क्स अचीव करने हैं 54 से 55 आउट ऑफ 60, and that too in only 75 minutes, your exam strategy should be solid. You should be able to score these many questions. उसके पहले you should be able to see all 60 questions. That is very very important, for which we are here. For which we are here. So how to get this score is a point of discussion. So जैसा मैंने बताया, if you want to score this in a good manner, first thing which you have to attempt is Konkani, because Konkani में 4 marks minimum चाहिए ही चाहिए. उसके बिना you will not be able to move ahead. After Konkani is done, as per our experience, you have to, or you should go for English, because English is something जिसमें either it is a right answer or it is a wrong answer. Konkani जैसा ही होता है, तो it is easy to score over there in English. Third such thing, if you want to attempt reasoning और मैथ्स आपका कितना भी अच्छा हो, मैथ्स में स्टूडेंट्स टाइम लगाते हैं, सो मैथ्स शुड गो एट द एंड. मैथ्स शुड गो एट द एंड. अगेन आई विल टेल यू, फर्स्ट यू शुड सॉल्व कोंकणी. वंस कोंकणी इज सॉल्व्ड, देन यू कैन गो फॉर इंग्लिश, देन रीजनिंग, एंड लास्ट में मैथमेटिक्स. एंड प्लीज 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 आप ऐसा मत सोचना कि एक क्वेश्चन अभी छोड़ दिए तो बाद में वापस आने का मौका मिलेगा. इस तरीके के एग्जाम्स में मौका नहीं मिलता है. यू नीड टू टाइम इट. मैथ्स पहले से स्टार्ट करोगे, मैथ्स शुरू में स्टार्ट करोगे, अगर 2 क्वेश्चन अटक गए, नॉट एबल टू मूव अहेड, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यू विल वेस्ट योर प्रेशियस 5 to 6 minutes इन दैट. देन आप कैसे आगे बढ़ेंगे? सो दिस कैन बी द गोल्डन रूल कि कोंकणी, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, दिस इज व्हाट कैन गेट यू द सिलेक्शन. फाइन. सो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है. नाउ आई विल बी शोइंग सम क्वेश्चंस एज वेल कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं थ्रू अ प्रीवियस पेपर और अ प्रीवियस सैंपल पेपर. बट डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. बारिश का मौसम है, इट इज रेनिंग हैवीली इन गोवा, सो प्लीज ट्राई टू रीच द सेंटर अ बिट इन एडवांस. भले सेंटर जाके वेट करना पड़ जाए इज फाइन, बट अगर ट्रैफिक में लटक गए या बारिश के कारण कहीं अटक गए तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. Second is a technical exam. So थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कंप्यूटर से आपको करनी चाहिए, या एक आध एग्जाम दे दो. इफ यू डू नॉट हैव एनी एग्जाम टू क्रैक, ठीक है, एट बोधी एकेडमी वी हैव वन वेबसाइट जहां से आप फ्री में एग्जाम दे सकते हो. thebodhiacademy.tcyonline.com. thebodhiacademy.tcyonline.com. You can go there and you can give the exam, give one free mock test from our side, that you can do directly from this website. After that, most important things, proper अच्छे कपड़े, लूज कपड़े आप पहन के जाइए जिससे योर माइंड इज कंट्रोल्ड. ये सारे के सारे एग्जाम्स, दीज आर माइंड कंट्रोल्ड एग्जाम्स. इफ योर साइकोलॉजी इज गुड, you will be able to clear it. If you
फंबल या कोई दूसरा सेक्शन या दूसरा क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लिया और वो सॉल्व नहीं हुआ, then it is going to be a very very big issue. So please, it's a request कि साइकोलॉजी आप बिल्कुल स्ट्रांग रखिए जब आप एग्जाम देने जाते हो. एडमिट कार्ड 2-3 प्रिंट आउट्स रखिए, आधार कार्ड इफ दे आर चेकिंग वो रखिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल में आपको पानी रखना है. इफ यू आर कैरिंग वाटर, it should be carried in a transparent bottle. You should have your napkin, you should have your pens, paper, everything ready. वहां पे रफ वर्क के लिए पेपर मांगने से पहले शर्माने की जरूरत नहीं है. You have paid for the examination. Because you have paid for the examination, you can ask for any number of papers. तो वो आप पहले से पूछ सकते हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. There is no issue whatsoever in that. So be prepared, be mentally strong, have a good food a day before. बहुत ज्यादा बल्कि नहीं खाना है जिससे नींद आ जाए, because it will be a complete AC room. So many a times it happens, we eat properly, अच्छे से ज्यादा खा लिया, वहां गए, नींद आ रही है, that time you will not be able to score marks. Because आपके पास एक क्वेश्चन बनाने के लिए 1.5 मिनट है, मतलब 1 minute and 30 seconds. अगर आप 54-55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उससे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है. So you need to be very very firm and very very strong solving this kind of question. Fine. So after this, when you will move ahead, when you will go ahead, then marks आपको तुरंत ही पता चल जाएंगे. So if you are getting anything near and around 48 say above, immediately start preparing for the second round. At Bodhi Academy, we prepare students for all the kind of examinations, and especially for civil, we will be preparing students for CBT2 as well, for technical assistant for civil branch. Electrical and mechanical, we are still on the way to process this, we are still on the way to start this, but civil 100% we are there. So accordingly, you need to be prepared mentally on how you will be able to cope up with all the situations. कुछ भी भूल जाओ, वॉलेट भूल जाओ, लेकिन अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, ये दो चीजें रखनी है. यूज पेन, पेंसिल, पेपर, वॉट एवर इट इज, फाइन. So this is the first thing. So important takeaway is first Konkani, then English, then reasoning, then mathematics. This is how you should move ahead. एग्जाम का पेपर कैसा दिखाई देगा, मैं एक बार एक पेपर दिखा देता हूं. The paper was assistant sub inspector wireless operator, same sort of thing. First there will be all Konkani questions, like this is a Konkani question. So from 1 to 10, from 1 to 10 you will get all the Konkani questions. This is part 1. 1 to 10 will all be Konkani questions. ये तो आंसर शीट है इसलिए इसमें मार्क्स लिखे हुए हैं. 1 to 10 will be the Konkani questions. Then it will start with English. Beautiful thing, आप उसी प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं. So English के जितने क्वेश्चंस हैं उसके बाद वो क्वेश्चंस दिखाई देंगे, सारे के सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस लाइन से आएंगे. अच्छी चीज ये है कि एग्जाम में शफलिंग नहीं है. One by one you will be able to see all the questions. Okay, once English is finished, then comes logical reasoning and mathematics in a combination mode. Fine. Like this kind of question, place value and face value of 9. Class 3 का question है, but ऐसे questions आते हैं. If you see our study material which we had given to the students, वहाँ पे आपको बहुत सारे इस तरह के questions मिल जाएंगे. Which of the following is always true? This is one kind of question जो geometry का है, but you have to answer it. And then mathematics के question उसको follow करेंगे. So maths and reasoning goes hand in hand. Squares, cubes, a plus b plus c, a plus b whole square, a minus b whole square, a plus b times a minus b, a plus b plus c का whole square. All these things you have to take into consideration. Okay, percentage, profit loss discount, all these questions will come in the examination. So you need to be better prepared for all these things. Okay, logical reasoning and maths will come hand in hand. So no need to worry. So इस तरीके से you can move along with the questions. But हाँ, कोंकणी को और इंग्लिश को सबसे पहले you can solve. That is something which is going to help you a lot. क्योंकि क्या होता है, it is all psychological. How it is psychological? Say for example, you are solving a paper.
you're solving a question paper. Say for example there are 60 questions and Konkani and English जिसके 20 क्वेश्चंस के आसपास हैं इनिशियली, अगर ये 20 क्वेश्चंस आप 10 मिनट्स में बना लेते हैं, जो कि बन जाएगा, उसमें ज्यादा सोचना नहीं होता, इधर इट इज राइट और इट इज रॉन्ग, एंड अलॉन्ग विद दैट जनरल नॉलेज भी वैसा ही होता है, बट इस पेपर में जनरल नॉलेज है नहीं। तो आपके पास अब कितने मिनट बचे? टोटल आपके पास 75 मिनट्स थे। नाउ यू आर लेफ्ट विद 65 मिनट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व इज ओनली 40। नाउ आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा टाइम है। This is something which will help you out. This is something which will boost your confidence. So please go and think in this direction on how you should or how you will be attempting the examination paper. You need to be firm on it. You need to be very much okay with it. इस चीज के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितने जल्दी आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो बना सकते हैं। ओके, नाउ कॉम्प्रिहेंशन इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश, बट वो शुरू में नहीं आता है मोस्टली। ओके, राइट नाउ ऑल लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आर गोइंग ऑन। ओके, ये क्योंकि सेकेंड राउंड का पेपर है तो दैट इज व्हाई देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देयर सब्जेक्ट नॉलेज। फाइन, तो जो आपको क्वेश्चन आएगा दैट विल बी कोंकणी फर्स्ट, and after that you have to solve English, then you have to solve reasoning, then you have to solve maths. This is what you have to follow. Approximate marks for passing that I had already told. Fine, so these things you need to take care before going for the technical assistant examination, and you will be able to fly and able to get good score from this. जैसे ही ये पेपर खत्म हो जाता है, you need to go for the round 2 examination. 48 marks is the cutoff, 48 marks is the benchmark. So 48 से ज्यादा लाओगे तो ही चांस है कि you will be selected. Fine, so this was all for this examination. The examination pattern and everything, I'd already told you some tips and all, the things to be taken care and all. Go with full confidence, psychologically sound, keep your patience, maintain your cool, and go and give this examination. If there is any help required, Bodhi Academy is one such institute wherein whenever you call for any suggestion or whatever advice you want, we will be there to help you out. And our new batches for the upcoming this 439 vacancies which have come for junior engineer and few commerce posts like accountant, state tax officer, we will be starting our batches from 11th. So if you want to attempt those examinations and want preparation from us, you are most welcome and you can join the batches. We will have another sessions like this for our Goa PSI examination, and the Bodhi Academy is coming up with perfectly matched test series for Goa PSI, specifically Goa PSI. That test series will be available from 1st. So these were all the things from our end. Thank you guys. All the best for your examination and future careers, further careers. Whatever confidence we have built in you or whatever confidence you have in you, go with that confidence and crack this up. This is all from my end for now. Thank you very much. We will meet again with our other YouTube live in the coming time.